Hello, my dear ninth graders. Exams are very close. Exams नजदीक हैं, तैयारी जोरों पे है. बस एक चीज है which looks difficult but is not actually. That is the case-based questions. See, MCQs we have practiced quite a lot, है ना? MCQs we have practiced quite a lot, but today it's the day for case-based questions, and believe me, if you are able to stay in this session till the end, I'll prove it to you that case-based questions are nothing. It's a mixture of little MCQs, little 2-3 marker questions, very easy, and you will be able to score maximum. So, how many of you are ready to finish this session end to end? Good evening. Hello, Jina, Anaya, Abhimanyu, Sujal, Dakshita, Seema, Anchal, Amrita, Rani, Janu, Nashra, Prajapati, Mantra, Pranav. Hello, clearly audible, clearly visible. Give me a thumbs up very quickly. फटाफट एक बढ़िया सा thumbs up हो जाए, एक बढ़िया सी इमोजी हो जाए, थोड़ा जोश चेक हो जाए और एक like button press हो जाए. Come on, press the like button. If somebody is new, subscribe to the channel. If you don't believe me, you watch this session and then take a call. तुमको पता चल जाएगा, जरूरी है, फायदेमंद है ये चैनल के नहीं. By the end, it's okay. But then, I'm pretty sure you will subscribe. Like this video, share it with your friends. Let's do it. Sunday noon. I hope you have had your lunch. क्योंकि हम करेंगे क्या? Attack case-based questions पे. बिल्कुल ईशानी. Welcome. Lalita, Rishika, hello. Nishal, same channel. Grade 10 case-based questions will happen at 4 p.m. today. Good afternoon. क्या बोलते हो? कर लिया जाए. Shall we do these case-based questions? See, top 5 questions, because it might seem like only 5 questions, but ये 5 question 5 नहीं है. They might be having sub parts. ये बन जाएंगे 25 questions. You won't even realize. कर लिया जाए. Shall we do them properly? Because this is Race to Exams 2024. बिल्कुल. अब बता साउंड की प्रैक्टिस कैसे करनी है बच्चा. साउंड का वन शॉट मैंने किया था. आप वन शॉट कर लो. उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर. बस इतना काफी है. Potential energy, we'll revise everything, but don't worry yaar. See, before this, today we are doing case-based questions. One shot of all chapters are done. Full chapter revision and quiz done. Right? Correct. We have all done all these things. And recently I did full marathon yaar for grade 9. कितने लोगों ने देखा वो? Complete physics marathon I did. It was about कितना था? 4 घंटे के आसपास था. 4.5 hours it was there, right? So all of this we have already done. ये हो चुका है. अगर आपने मिस किया मतलब आप रेगुलर नहीं हो. बी रेगुलर, वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गुड यार. यू वॉच्ड इट, वेरी गुड. बिल्कुल. चलो तो बिना किसी देरी के चालू किया जाए. हाउ इज द जोश? संडे का दिन है. ऑल ऑफ यू आर फुल इन एनर्जी. पढ़ाई के मूड से आए हो. आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड. हाउ इज द जोश? एकदम मचा दिया जाए. 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन एक चैप्टर से है और वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा. दैट फुल चैप्टर विल रिवाइज इन दैट वन क्वेश्चन. रिलैक्स. हाई, वेरी हाई. सॉन्ग नहीं गाया, आई नो. बच्चा देखो, सॉन्ग क्या है ना, सॉन्ग स्पेशल ओकेजन्स के लिए यार. अब हर क्लास में गाना गाएंगे तो पढ़ोगे कब तुम? गाना शुड बी स्पेशल. गाना सुनाऊंगा तुम्हें. विल हैव एग्जाम से पहले ना एक बढ़िया सेशन होगा जहां पर फुल रिविजन होगा उस दिन. ठीक है? नाइस, थैंक यू सुजल. Next last time 4 Manjula, it is 4 p.m. for grade 10th. grade 9 के लिए next week they are happening. It's happening. ठीक है, right? बिल्कुल. अरे कल छुट्टी होगी तुम लोग की ना. Everybody, let's begin. Like and share. अब भी करना है. फटाफट दोस्तों को बुला लो क्योंकि आज का दिन 1.5 hour will do everything. चलो. First question on your screen. अब case based question की खास बात क्या होती है? उसके अंदर एक होता है case. A big paragraph which gives you lot of information. और इसी को देख के हम लोग डर जाते हैं. कितने लोग डर जाते हो? How many of you, when you go to read this whole paragraph, you feel like, oh, sir, इतनी सारी चीजें पढ़ने को देनी यार, इसने क्या पढ़ना है, इसमें से समझ नहीं आ रहा. That is the biggest fear in case-based questions. This paragraph, right? I'll tell you how to read these paragraphs, right? है ना? Holiday था, अरे वाह, very good. Me. Aishwarya ma'am, बच्चा, she is recovering her throat. Yes, the doctor said you have to take a rest for a month and that's why she's not taking sessions. Don't worry, she'll be back. Me, है ना? Listen to me now. देखो,
whenever you are reading such kind of a paragraph, first thing, it is a possibility that paragraph might be very scary, lekin questions might be very very easy. That's one possibility. Second possibility, you read this paragraph and whatever you are able to understand na, you take the information from that. What do you mean, sir? Let's read it together, है ना? एक बार खुद पढ़ते हैं फिर डिसाइड करते हैं क्या करना. A body is said to have uniform motion. Do I know uniform motion? हाँ, I know. Equal distance, equal intervals of time. ठीक है, I know uniform motion. If it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these intervals may be. ठीक है यार, कुछ एक केस बता रहा है. What is uniform motion? पता है हमको तो. ठीक. The distance traveled by an object in uniform motion increases linearly. Sir, क्या बोल दिया? समझ नहीं आया. The distance traveled by an object in uniform motion increases linearly. Whatever you are not able to understand, keep it there. It's okay. डरना नहीं है. ठीक है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई नहीं, आगे चलते हैं. A train travels from one station to the next. Okay, अब ट्रेन की बात हो रही है. The driver of train A starts from rest. ठीक है, सर ट्रेन A है जिसका कि starts from rest ना, u is equal to 0. Okay. At time t equal to 0 and accelerates uniformly for the first 20 seconds. अच्छा, यानी कि सर t is equal to 0 पे we have u equal 0. t is equal to 20 तक it accelerates. करेक्ट है ना? accelerates uniformly. ठीक है भाई. At time t equals 20, ट्रेन की स्पीड कितनी है? सर स्पीड इज हाउ मच? 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है भाई, 20 सेकेंड्स पे we have 25 मीटर पर सेकेंड. ओके. Travels at this speed for further 30 seconds. Next 30 seconds है ना? यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया? 20 सेकेंड it traveled है ना? And it reached 25 मीटर पर सेकेंड. Further 30 seconds तक it will maintain its speed. कितना? It travels at this speed for further 30 seconds, decelerating uniformly to rest afterwards. 30 सेकेंड तक इसने अपनी स्पीड मेंटेन करी. कितनी? 25 मीटर पर सेकेंड. तो यानी कि t is equal to 50 सेकेंड्स तक कितनी स्पीड थी? 25 मीटर पर सेकेंड. Yes or no? Is this point clear? भाई केस आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है यार, केस सब कुछ बता रहा है तुमको, है ना? यस. टोटल टाइम फॉर द जर्नी ऑफ ट्रेन ए 60 सेकेंड्स. टोटल टाइम लगा 60 सेकेंड्स. ठीक. 50 सेकेंड तक स्पीड सेम ही थी. टिल 50 सेकेंड्स इट वाज 25 मीटर पर सेकेंड. टोटल टाइम था 60 सेकेंड. 50 to 60 के अंदर क्या हुआ होगा? What happened between 50 to 60 seconds? In this last 10 seconds, what happened? Deceleration happened, na? Why? Because decelerating uniformly to rest. Finally, train रुक गया. कब? 60 सेकेंड पे. तो 50 से 60 में क्या हुआ था? Deceleration हुआ था, है ना? Yes. समझ में आ रहा है? हाँ, very good. चलो आगे आओ. Total time for the journey of train A 60 seconds. That is fine. Another train B is traveling in the parallel of train A with zero initial speed. ठीक है, एक और ट्रेन B की बात हो रही है जिसकी zero initial speed है. Accelerate for first 10 seconds. 10 seconds के लिए acceleration was uniform. At time t equals 10, it reaches a speed of 30 meter per second, then travels speed for the further 20 seconds before decelerating. सर बहुत इंफॉर्मेशन है. Yes or no? बहुत सारी इंफॉर्मेशन लग रही है. Yes or no? Correct. Doubt? Coco tube? I'll take the doubt बच्चा. First of all, let's do this. Come on. अरे 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 क्या चल रहा है चैट में? Focus, focus. Yes. बढ़िया. हाँ. बहुत अच्छे. Information looks too much. Too much info. Yes. अब question wise पहले केवल पढ़ लो. Whatever you are able to understand, underline it. और आगे चलते हैं. Question करेंगे, है ना? One by one we'll look at each of the case. ठीक है? हाँ. Very good. Yes. समझ नहीं आता कोई बात नहीं. मैं नहीं बोल रहा हूं केस को पढ़ के ही सब समझ जाना है. क्वेश्चन करो ना आप. एक एक क्वेश्चन में ना एक एक चीज दोबारा पढ़ेंगे. इन योर इंग्लिश देयर इज दोस क्वेश्चन नो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते थे. एक पूरा पैराग्राफ आया करता था. ऐसे थोड़ी एक पैराग्राफ पढ़ के पूरा आंसर करते थे. नहीं, यू विल रीड इट. इट्स ओके इफ आई गॉट समथिंग 30% आई गॉट, 70% आई एम नॉट एबल टू गेट. लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर एक बार दोबारा देखेंगे इसको. ठीक है ना? पैसेज बेस्ड. वेरी गुड. हेलो श्रीमय, बहुत अच्छे. चलो आगे आओ. ड्रॉ VT ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ट्रेन A एंड B. अच्छा, A और B के लिए ना हमको क्या बनाना है? VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कितने लोग बना लेंगे? अब हमको केस पढ़ना होगा अच्छे से अलग अलग फॉर ट्रेन A एंड ट्रेन B. यस, जल्दी. बबुआ ओपी. यस, कम ऑन. कौन सा ग्राफ चाहिए? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए.
Who will give the information? The passage will give the information. Yes, me बना लोगे? बहुत अच्छे. चलो चालू करते हैं भाई. पहले ट्रेन ए की बात करते हैं ना. लेट्स टॉक अबाउट ट्रेन ए. लेट्स टॉक अबाउट ट्रेन ए. ट्रेन ए देखो यार. फॉर ट्रेन ए दिस इज योर V and this is your T. Correct? है ना? Udayan, that's true. It happens. So that's why पैनिक नहीं करना. Don't panic, है ना? Read it again and every question पे ना ध्यान से दोबारा पढ़ो. हो गया? बहुत अच्छे यार. देखो भाई, ट्रेन ए की बात करें. ट्रेन ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ठीक है सर, यानी कि ट्रेन ए इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. यहां से चालू हुआ कहानी. ठीक. उसके बाद एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स. यानी कि पहले 20 सेकेंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैपेंड एंड ट्रेन रीचेस अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक. सो आई वुड से कुछ इस तरह से हुआ है ना. दिस इज व्हाट हैपेंड एंड ट्रेन हैज रीच्ड वेयर 25. दिस इज इन मीटर पर सेकेंड. ठीक. 25 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड्स में. करेक्ट. हाँ, नाइस. बहुत बढ़िया पूर्वी. कोई बात नहीं, करेंगे. चलो आगे आओ. देखो, टिल 20 सेकेंड्स हमको पता है एवरीथिंग, है ना. वी नो एवरीथिंग. आफ्टर दैट क्या हुआ? देन ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर फर्दर 30 सेकेंड्स बिफोर डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली टू रेस्ट. यानी कि 20 के बाद नेक्स्ट 30 सेकेंड तक क्या हुआ है? कैसा होगा वीटी ग्राफ? वीटी ग्राफ कैसा दिखेगा? दिस इज 20. ये तो 20 है. इसके बाद 30 सेकेंड्स तक फर्दर 30, यानी कि 20 प्लस 30 यानी कि 50 सेकेंड्स. 20 के बाद फर्दर 30 मींस 20 प्लस 30. सो 50 पे इसकी स्पीड कितनी थी? द स्पीड वाज 25 ओनली यार. ओके सर, करेक्ट. ये समझे? कांस्टेंट लाइन. वेरी गुड. दिस इज ग्रेड 9th. ओके. अब उसके बाद क्या हुआ? सर टोटल टाइम फॉर द जर्नी इज 60 सेकेंड्स. ठीक है जी. टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम इज 60 सेकेंड. 50 के बाद 60 तक ये जाता है. एंड आफ्टर 50th सेकेंड 50 से लेके 60 में हुआ है क्या? डिसेलरेशन फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड. स्पीड कितनी हुई है? 0 हुई है. सो यू विल ड्रॉ द ग्राफ समथिंग लाइक दिस. बन गया बीटी ग्राफ. ग्राफ का यही पर्पस है. ग्राफ्स आर मेंट टू मेक योर लाइफ इजी. ये ग्राफ देखो और वो पूरी कहानी सुनो, है ना. वो पूरी राम कथा सुनो. वहां पे दैट होल कहानी, दैट होल स्टोरी इज टेलिंग यू दिस ओनली फॉर ट्रेन ए. कितना इजी है ना. इसको देख के बताना. एग्रीड. 95 इन फिजिक्स. वेरी गुड यार. डज दैट शो कांस्टेंट एक्सेलरेशन? यस आंचल. स्ट्रेट लाइन, दिस काइंड ऑफ अ लाइन शोज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट. दिस ग्राफ इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कंपेयर्ड टू ऑल थ्योरी व्हिच इज गिवन. यस, अब समझ में आने लगा है ना. करेक्ट. ट्रेपीजियम. यस, वेरी वेरी इजी. चलो ट्रेन ए का बन गया. दिस इज फॉर ट्रेन ए. ट्रेन बी का बना दो यार फटाफट, जल्दी. कम ऑन. अरे वाह, नाइस सुजल. ओ वेरी गुड यार श्रीमय. गुड गुड. वेरी इजी. बहुत बढ़िया. ट्रेन बी. एवरीवन अपनी कॉपी में बनाओ अभी के अभी एंड देन यू क्रॉस चेक विद माइन. आई एम ड्रॉइंग इट, यू ऑल्सो ड्रॉ एंड टेल मी इट वॉज सिमिलर. एकदम सिमिलर था कि नहीं ये बताना है आपको. ठीक है. चलो कर ले. ओके सर. ट्रेन बी की बात करते हैं. अगेन वी हैव टू ड्रॉ वीटी ग्राफ ना. ठीक है. नाउ व्हाइट इज माय एक्सिस कलर. वीटी यहां पे. ओके. साइंस फैक्ट्स. थैंक यू. कम ऑन. आओ इधर आओ. फॉर ट्रेन बी, अनदर ट्रेन बी इज ट्रैवलिंग इन पैरेलल ऑफ ट्रेन ए विद 0 इनिशियल स्पीड. ठीक है जी. देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स. एट 10 इट रीचेज अ स्पीड ऑफ 30. मतलब 10 सेकेंड पे स्पीड कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड ना भाई. सो दिस इज योर 10 एंड दिस इज योर 30 है ना. आपका ये पहुंच गया ऐसे. फाइन. दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. उसके बाद देन ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर फर्दर 20 सेकेंड्स. नेक्स्ट 20 सेकेंड मतलब टोटल 30 सेकेंड ना. 10 प्लस 20. ट्रेवल्स एट दिस स्पीड. इस स्पीड से वो ट्रेवल करेगा. ओके सर. ठीक है. फाइन. फाइनली डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली टू रेस्ट. टोटल टाइम फॉर द जर्नी इज 80 सेकेंड्स. भाई 30 सेकेंड तो यहां हो गए बट टोटल टाइम वाज 80 सेकेंड्स. करेक्ट. यानी कि
80, 30 plus 50, उसके अंदर it is decelerating like this. ये बन गया B ट्रेन का ग्राफ. Again a trapezium, but slopes अलग अलग हैं. You also got the same thing, yes or no? Same चीज आई थी तुम्हारी, जल्दी बताओ. It's a very long case-based question. Case-based questions are long. That is the truth. Starts from u equals 0. That सही बात है. Like a trapezium. Same चीज with the values. यही आया था, yes or no? Everyone, फटाफट, yes or no? Same आया ना, एकदम same. पक्का? अगर ये आता है आपको, आप तो प्रो हो ग्राफ में, डरते क्यों हो तुम लोग? अगर तुम्हारा ये बन गया, इससे भारी नहीं आएगा. रिलैक्स. तुम प्रो हो फिर ग्राफ में, डरने की जरूरत ही नहीं है. सर हम तो महान है. ठीक है, पक्का, बहुत अच्छे. बन गए वीटी ग्राफ, बहुत बढ़िया. आगे आओ. What is the deceleration of train A as it comes to rest? The graph that you have drawn, सारे आंसर उसी में छुपे हुए हैं. पक्का ना, बहुत बढ़िया. आपने जो ग्राफ बनाया है ना, सारे के सारे आंसर उसी के अंदर हैं. सारे आंसर उसी के अंदर है. कैसे? ध्यान से देखो. सर हमने क्या ग्राफ बनाया था? We have to find deceleration of train A, यानी कि we have to find this, the slope. यार एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज 25. ठीक, टाइम ड्यूरेशन इज 10 सेकेंड्स. ओके सर. v is equal to 0, u is equal to 25, t is equal to 10 seconds. तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा? v minus u by t, that is 0 minus 25 upon 10, that is of minus 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये रहा आंसर. क्या दिक्कत है इसमें? आपने टाइम 10, 20, 30, 40 लिया है. आशुतोष, इट्स ओके. इन योर कॉपी ना, you have to choose the scale. तो आप लिखोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and that's how you will draw. That is fine. कोई दिक्कत नहीं है. Yes, स्वाति, I'm really sorry. I don't know. Clear? Minus 2.5 आ गया सबका, बहुत बढ़िया. Next. So this is something we just did. In which time interval speed of train B is constant? हाँ जी, come on. Tell me. Look at your graph. In which time interval speed of train B is constant? In case based, if it has 4 subparts, one of them might take time. Rest 3 will be very easy. 10 to 30. In which time interval? 10 to 30 seconds, right? Total 20 seconds starting from 10 till 30 seconds. That is your answer. Correct, है ना? Fine. बहुत बढ़िया. So, the time interval is 10 seconds to 30 seconds. Correct? Done, sir. Very, very easy. 30 to 80. No, 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 no. 30 to 80 नहीं बेटा. This is not 30 to 80. 30 to 80 में तो deceleration is there. But 10 to 30 में we have constant speed. That is the question. ठीक? Fine. What is the maximum speed of train A and B? Everything is in graph. अगर ग्राफ सही बन गया, if you have got your graph right, every answer will be right. For sure. Raindrop. Science facts. Raindrop, you are saying man versus rain wala. That is grade 11 बच्चा. Raindrop वाले questions, either it is a straight line motion, free fall. That's a very same thing. Man, rain questions, rain man questions होते हैं grade 11th में. 25 and 30. Very good. For train A, it is 25 meter per second. For train B, it is 30 meter per second. Done. Now you tell me, was this question tough? Was this question tough? Yes or no? Finally, क्या लगता है तुमको? Was this question tough? क्या लग रहा है? Tough था क्या ये? Is it? नहीं ना, है ना? This was not tough. There was nothing in this. If you are able to draw the graph, after that the question is very very easy. एकदम आसान क्वेश्चन है उसके बाद. करेक्ट है ना? नॉट एट ऑल. बहुत बढ़िया. चलो आगे चलें. Shall we do next question? हाँ, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी. ये तो खेलते खेलते सॉल्व हो गया. बहुत बढ़िया. वाटर टैप से ड्रॉप से इंटरवल फॉल कर. साइंस फैक्ट ओलंपियाड में कराया था मैंने वाला क्वेश्चन. बट यू कैन आस्क मी अगेन. इफ यू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई गिव यू लिंक ऑफ द क्वेश्चन. डोंट वरी, वो क्वेश्चन करा रखा है मैंने पहले. चलो आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. In the figure below, the card is flicked with a push. The card is flicked with a push. It was observed that the card moves ahead while coin falls in glass.
We have analyzed previous year papers of almost many schools in India, है ना? श्री चैतन्य गुरुकुल, DAV, DPS, स्वामीनारायण गुरुकुल, सेंट एंजल, कौन सा था, हाँ, लिटिल एंजल्स, सो ये KV, ऑल ऑफ दीज स्कूल्स. ये क्वेश्चन ना बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है केस बेस्ड में. ग्रेड 9th में ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन रहा है. यस, कार्मल, yes, we saw Carmel also. This is a very famous question. I have seen in most of the papers, case-based question from force and laws of motion. Now, it's a very famous case-based question. That's why I'm giving it to you right now. All right, chalo. In the figure given below, card is flicked. This case looks very easy. है ना? Question पूछते हैं. Give reason for the above observation. What is your reason? Nice, Sujal. Good. Give reason for the above observation. इस observation के लिए reason क्या है? क्या है reason? 4 options. The coin possesses inertia of rest. It resists the change and hence falls in the glass. दूसरा बोल रहा है second option. Coin possesses inertia of motion, resists the change and falls in the glass. Third, coin possesses inertia of rest, accepts the change and hence falls in the glass. Last, coin possesses inertia of rest, accepts the change and hence falls in the glass. What do you think? A. Very good. See, one thing is clear, it is inertia of rest. Why? Because coin was at rest. How do you define which inertia is it? Body पहले क्या कर रही थी? That defines what kind of inertia is it. If the coin was at rest, मतलब it is inertia of rest. If the coin was moving, it will be inertia of motion. But now the coin was at rest, means it had inertia of rest. So one thing is sure, B is wrong. Sir, B तो गलत है. Now inertia of rest की वजह से it will resist the change. It wants to be at rest and that is why it will fall in the glass. So option A becomes the right answer. क्या था इसमें? Such a simple question, है ना? Correct? एकदम आसान. Science facts, yes, it can move, but that is why if you read flicked, flick मतलब ऐसे ऐसे नहीं पकड़ के आराम से खींचा, हौले हौले नहीं खींच रहे हो तुम, मार रहे हो उसको. करेक्ट है ना? C and D are same. हाँ, you are right here. C and D are same. बहुत बढ़िया. Good catch. हाँ, if the coin moved with the card, Amruta, because you flicked, it will not move. You can try it out. Take a small piece of paper or cardboard, put it over a glass and put a coin and then you flick it. You will see. If you flick very quickly, na, the coin will fall. Correct? है ना? Coin का example. Yes. Next. Name the law involved. ओए होए. Sir, I will tell. Very easy question. क्या लगता है? Name the law involved. कौन सा law है ये? कृषु? बच्चा पढ़ाते पढ़ाते चलेगा ये तो. None in school. Good. Yes. Do you understand why? भाई ऐसे सोचो. If I have this hanky and this remote, if I take this hanky, बहुत जल्दी, the remote remains there. That's why. First law, Newton's first law. First law is very simple. A body is lazy. Whatever the body was doing, it wants to keep doing that until a external unbalanced force act on the body. जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक जो बॉडी जो कर रही थी वही करती रहेगी. मैं बैठा हुआ था मैं बैठा रहूंगा, मैं सो रहा था मैं सोता रहूंगा, मैं चल रहा था मैं चलता रहूंगा. इट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी इनर्शिया. ये तो होती है इनर्शिया, है ना? सच बात है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वेरी गुड. यस, साइंस फैक्ट हियर, राइट, बिकॉज टाइम इंटरवल बहुत छोटा था इसलिए 4 ज्यादा हुआ. इफ द अबव कॉइन इज रिप्लेस्ड बाय अ हेवी 5 रुपी कॉइन, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन? गिव रीजन. इसकी में यू कैन गिव 2 आंसर्स फॉर दिस. आई विल टेल यू बोथ. यस, आशुतोष, ग्राफ. बच्चा ग्राफ तो बहुत ही इजी था. आप एक बार रीडिंग लिखो सारी और उसके हिसाब से ग्राफ बनाओ. दोबारा बन जाएगा. आई एम टेलिंग यू. एक बार खुद प्रैक्टिस करना, बहुत आराम से बनेगा. लेकिन एक बार ग्राफ बन गया ना, तुम्हारा ग्राफ क्लियर हो जाएगा. यस, थैंक यू कृष्णा. एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. ईशानी, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मींस नेट फोर्स 0. इफ देयर इज अ बॉडी एंड यू अप्लाई 2 न्यूटन लाइक दिस बोथ साइड से, it is net force is 0 na. 2 and 2 cancel out. You want unbalanced force 4 and 2. That is okay. Same and fast inertia. Yes, Amrita. More force is required. Science facts. Good answer. Position time graph. रविंद्रा, कुछ नहीं है. टाइम के साथ साथ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बस वो ट्रैक करते जाना है, मिल जाएगा. It will fall into the glass.
Ha. I'm good, Ashutosh. Thank you. So listen. If you increase the mass, what is increasing? Can someone tell me? If a coin becomes heavier, what is increasing? Like, what property is increasing? There is a word I'm looking for. Come on. Nice. More mass, more inertia. If you increase the mass of a body, now the body becomes even more jiddi, even more adamant. I want to be at rest, matlab I will be at rest. I will not go anywhere. If the coin has more mass, now what is happening? It wants to maintain its state of rest. Hai na? Yes, it has more inertia. So that's why what will happen? Because mass because inertia depends on mass. More mass, more inertia. That's why body has more tendency to maintain its state of motion. The coin will fall down. Condition क्या है? You might have to overcome the friction, you might have to apply more force, है ना? Good flick. Condition, the flick should be quick. The flick should be quick. If you increase the mass of the coin, the friction will increase, that's true. But your flick should be quick. है ना? Yes. बहुत बढ़िया. अरे वाह. बढ़िया. Correct. बहुत अच्छे. चलो. Explain why it is dangerous to jump out of a moving bus. चलती बस से उतरने में क्या खतरा है? Come on. I'm from UP. It's not. Science fact here, right? अरे नहीं यार. 10th का हो रहा है 4 बजे. Case based question. बिल्कुल. Because you are in motion. चोट लगेगी. Yes. See. The bus is moving. You are on the bus, so your body is also moving. Your body has what kind of inertia? Because you are on the moving bus, your body has what type of inertia? Sir, inertia of motion. Your body wants to be in motion. But when you jump out of a moving bus, you are thinking that you will stop. But your body wants to keep moving. So क्या होगा? You will jump, your legs will touch the ground, your legs will stop, but your upper body will go, oi, dham. So that's why whenever we jump, first thing is we should not jump. If you are jumping, you should be jumping with your face in the forward direction. जिस तरफ गाड़ी चल रही है, उस तरफ face रहना चाहिए ताकि आप जैसे उतरो ना तो ढक 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 थोड़ा सा भाग के रुक जाओ. Getting my point? हाँ, inertia बहुत सही. Why it is dangerous to jump out of a moving bus? Because your body has inertia of motion. But when you jump, आंसर लिख के दिखा रहा हूं मैं. I don't do this usually. But when you jump, your feet come at rest because they are in contact with the ground, no? है ना? But upper body keeps moving, leading to a fall. बढ़िया? हाँ, स्पीड ज्यादा हुआ तब भी चोट लगेगी. इंटेंसिटी ऑफ साउंड. जिंदगी एक मौका एक. सी इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे आएंगे हम लोग. वी हैव अ साउंड क्वेश्चन ऑल्सो. आई विल आंसर योर क्वेश्चन. डोंट वरी. अरे बिल्कुल यार अंशिका, डोंट वरी. हाँ, शॉर्टेस्ट आंसर, बोन सिल्पी. Right? With this, we are done with question of force and laws of motion. I got one question about intensity of sound. I'll come to that in the sound question. ठीक है ना? If there is no need to jump, the bus would stop. हाँ, that's a very best thing, and that's actually we should do. कभी चलती गाड़ी से तो कूदना ही नहीं है. We should never jump from a moving bus. Yeah, it's a very basic thing. Correct? Right? Nice. Yes, a lot of things can break, so we should not jump off a moving bus. That's the truth. Chalo. Next question. Question number 3. There is no atmosphere on the moon. Yes, sir. I agree.
This is because gas molecules need a certain amount of force of attraction to be retained on a heavenly body. I told you, sometimes the case can talk about entirely different vague things. Sir, ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सुन लो. Just listen, but don't judge. Just listen the case, है ना? क्या बोल रहा है case? सुन तो लो, फिर देखते हैं. The force of attraction of the moon is less than the required force. Hence, no atmosphere can exist. Okay, sir. I kind of understood. It's okay, fine. It is quite difficult to lift heavy objects on the earth, but it becomes very easy to lift the same heavy weights on the moon. कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि यार मून का ना ग्रेविटेशनल पुल कम है अर्थ से. That is the gist of it. That is the summary of this whole case. है ना? Correct? Yes. Universal law of gravitation. Which chapter? This is from gravitation. आसान है ना भाई. केस पढ़ के you get a feeling. क्या feeling आया इसको पढ़ के? Sir, I got a feeling that case is talking about universal law of gravitation. Moon has less gravity, so it attracts things less. It is easy to lift weight. Atmosphere is not on the moon. Earth पे मुश्किल होता है. All of this मैं समझा थोड़ा थोड़ा. Correct है ना? Which chapter? This is gravity. Clear ना? This case gave you a feeling. This feeling is good. It is good enough. इससे आगे चल सकते हैं. Everybody got this feeling? Yes. Nadejang, not just mass. You can't say mass is 1 by 6. You can say G is 1 by 6 because it depends on mass and radius both. Oh, sorry, pole. ठीक है, I'll give you pole. पक्का? इतना ठीक है? Feeling बढ़िया आया? Okay. चलो, question कर लें. What to solve? Sujal, I'm giving you the question. It's a case, not the question. This is the question. It's a MCQ, right? This is a multiple choice question, 1 mark question after the case. The value of G on the moon, the value of G on the surface of the moon, first option, is same as that on the earth. Second is less than that on the earth. Third is more than that on the earth. Last keeps changing day by day. If you notice, the questions asked in a case-based questions, they are relatively easy. Case में ना, it is only the case which gives you थोड़ा सा anxiety, but questions are quite easy. These are all your exam level questions. ये सब उन school paper से उठाए गए questions हैं. Yes, you're right. है ना? Quite easy. We just have to understand it. Yes, you're right. And sometimes even if you don't understand it, read the question. Sometimes questions are entirely different from the case. That is also a possibility. ये पिछले साल grade 10th के उसमें हुआ था. Case पढ़ने में बड़ा मुश्किल था, but questions were very easy. Keeps changing day by day, right? Okay, I'm ending the poll. 3, 2, 1. Now, you're right. You're right. Lucy. What do we have? Option B is 90%. Oh, yes. The value of G on the moon is less than that of the earth. In reality, G of the moon is equal to 1 by 6 of G on the earth. यानी कि 9.8 upon 6 होता है. Correct? चलो. Next question. The atmosphere consisting of a large number of gases is held to the earth by, again, very easy question. Are 10 times hard than boards. Aditya, in your board examination, no, they are preparing you even for the worst questions, right? It's okay, you attempt all those questions, but for the boards now, please make sure NCERT, in-text question, exemplar, you are able to solve these 3. अगर ये 3 हो गए ना, तुमको बोर्ड में कोई हिला नहीं सकता. Nobody can touch you in boards. Namaste. God's grace. D. You're right, yaar. The answer is gravity. Why is atmosphere on Earth? Because Earth has gravity, which means all the planets which have even more gravity, they have atmosphere. I'm not saying their atmosphere is habitable. No, that is not true. Jupiter पे atmosphere बहुत strong है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भैया उस पे रह सकते हो. Correct? Earth का atmosphere बढ़िया है. Oxygen है, nitrogen है ना, सब कुछ है. So that's why we have atmosphere, because of gravity, not magnetic field, not clouds, not winds. Winds, clouds, everything is because of gravity only, है ना. पोल नहीं दिया? I know. अरे ये आसान क्वेश्चन था यार. Next में I'll give you पोल. ठीक है?
चलो next question में I am giving you poll. The mass of moon, it seems like numerical, huh? I am giving you poll by the way in this question. La 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 la. Hanji, the mass of the moon is about 0.012 times that of Earth, and its diameter is about 0.25 times that of the Earth. The value of universal gravitational constant G on the moon will be 4 options. Come on. अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब क्यूट क्वेश्चन है ये, I would say. Come on, poll is active. Mass of moon is given to you, which is 0.012 times of the Earth, and its diameter is about 0.25 times of the Earth. Value of gravitational constant G on the moon will be how much? अंशिका मेंटी नहीं है, YouTube poll है. C, everybody says C, huh? Okay, I'll end the poll now. 3, 2, नजरों का धोखा देने वाला क्वेश्चन. 1. Now, I'm ending the poll. Yes, option C is 60%. Bhai, there is a reason this constant has a word universal attached to it. कोई कांस्टेंट तुमने सुना है ऐसे यूनिवर्सल लिखता हो अपने नाम के आगे, मैं यूनिवर्सल हूं ना? It is only this constant, universal gravitational constant. मुझे किसी से मतलब नहीं है. I am a constant, I will remain a constant wherever you in the universe. So G does not depend on anything. It is G in Earth, it is G on Moon, it is G on Jupiter, it is G on wherever you go. I'm not saying black hole because that is whole different thing. Correct? So correct answer is option C. Clear? Yes? Very good. Right? है ना? If the weight of a body is 6 Newton on the Earth, it will be about dash on the Moon. I actually gave you a hint few minutes back. If the weight of a body is 6 Newton on the Earth, it will be about dash on the Moon. Come on. Yes, Anshika, you're right. Rise, Sujal, Nadir, Shreya, Lakshya, Shashi. Answer is subjective. Subjective? This is a subjective question. 1. It's a fill in the blank question. Mostly 1 marker question, है ना? Because G on the moon is equal to G of Earth by 6 times, means weight on the moon is equal to weight on Earth upon 6. That is 6 Newton by 6, that is 1 Newton. That is your answer. Correct? Easy? Very good. So that's how you will solve. Gravitation में, this is 1 case based question. See, today, after today's session, what I'm saying is all these questions, I have 2 objectives. 1, to revise, obviously. 2, to get the fear of case based questions out. मैं चाहता हूँ तुमको डर ना लगे उसके बाद, ताकि after this, when you are solving your mock papers, sample papers, exemplar questions, whenever you are doing that, no, I want you to feel confident and attack case based questions without any fear. अब नए केस बेस्ड क्वेश्चन खुद से चालू करो, बहुत जरूरी है ना? यस आशुतोष, आई टोल्ड यू. ओह नाइस यार दिशा, थैंक यू. रहीम, इट इज एट 4 PM टुडे. श्रेया, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन अर्थ, हर कोई फिसलता हुआ मिलेगा तुमको. आज फिसल जाए तो हमें न उठाइए. दैट काइंड ऑफ अ थिंग विल हैपन. सो इफ देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन अर्थ, लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल. दैट्स ट्रू. यस Amruta, it has. All right, ready? Next, work energy question. Again, case looks big. Sir, बड़ा बड़ा दिख रहा है तो ये क्या है? Okay, work energy. एक बार करते हैं फटाफट. चलो आ जाओ. A moving object can do work. मानते हो? Do you agree? A moving object can do work because it has energy. Which energy? Kinetic energy. Yes, sir. Okay. My favorite chapter. Very good. अच्छा, only 23 likes. Likes नहीं, we have 57 likes. Everyone who hasn't pressed the like button right now. It is a Sunday. We are having this session. क्यों? I would have slept at my home very nicely यार. मैं घर पे आराम से काम करता, बीवी अलग गली आ रही है. क्या जरूरत है क्लास लेने का संडे को? But why are we doing it? Because Sunday is a free day, right? We want you to spend this day studying also. आज इसीलिए क्लास हो रहा है, वरना कोई जरूरत था नहीं. अच्छे से कर लेता मैं, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, है ना? अगर आए हो,
press the like button because this motivates everybody. हम भी घर बोलेंगे ना यार, बच्चे लोग आए थे देखो, they wanted this class, that's why we had this class. क्या कल क्या बोलेंगे हम लोग, है ना? Come on. A moving object can do work. An object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. Sir, that's true. Correct, है ना? Yes. A moving bullet, blowing wind, a rotating wheel, a speeding stone can do work. Everything which is moving can do work. Correct, है ना? Don't worry, don't be confused. Relax, relax. How does a bullet pierce the target? How does the wind move the blades of a windmill? Objects in motion possess energy. We call this energy kinetic energy. The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. The unit of energy is therefore the same as that of work, that is joule. When you read this complete case, what is the feeling you get? क्या feeling आया तुमको? Thank you, Lucy. Correct, Sujal. What is the feeling you got? ERG is CGS unit. Easiest chapter है, ठीक. Transfer of energy. Okay. ये तो कुछ नहीं है. About kinetic energy, very good. This complete case is telling you just very few things. One, if a body is moving, it has kinetic energy. It can do work because energy is the capacity to do work. बस इतनी तो बात बोली है पूरे केस ने, है ना? केस ने और कुछ बोला ही नहीं है. केस कहानी कर रहा है, बोल रहा है कि rotating wheel, blowing wind, speeding stone can do work because they have energy. It is called as kinetic energy. How does wind move the blades of a windmill? Because wind is moving. Objects in motion possess energy. अरे भैया साफ साफ बोल दो, kinetic energy होती है, उसकी वजह से वर्क होता है. सिंपल सी बात है ना. This is the complete thing this question is saying, है ना? Yes. Manju, don't worry. You tell me in the comment section. No, I'll tag Arshna. Right? Let's look at the question. Which one of the following does not possess kinetic energy? I'm not giving you a poll for this question. Very easy question. Anchal, see, right now it's a very good time. You can tell us what exactly you want. Use the comment section. Because right now we are planning for the future. हम लोग आगे और क्या करने वाले हैं तुम्हारे लिए? We are planning for that. So whatever you guys have in mind, no, tell us specifically. Sir, यहाँ दिक्कत है. ये करवा दो. It will happen. See, yaar, there is no problem. Everything is moving except C. Moving bullet has potential energy. Nah, it has kinetic energy. Why? Because it is moving. Half mv square. Blowing wind, it is blowing. Nah, it is moving. It has kinetic energy. Rotating wheel, it is rotating. It is moving. It has kinetic energy. But a stationary dog is sitting quietly. Stationary dog. It is at rest. So no kinetic energy. Very good. बहुत बढ़िया. Correct answer is option C. Very good. MGH. It is at rest and at ground, then you will say MG is also 0. Chalo, come on. Which of the following has same unit? Oye hoye. This is an actual question, by the way. ये question ऐसा नहीं है बनाया गया है. It's an actual school paper question. तो तुम देख लो, case based question ना easy आते हैं. Come on. Rock has potential. हाँ, you can say that. Which has same unit? Potential energy force, kinetic energy work, kinetic energy force, potential energy and power. आशुतोष बिल्कुल. ओ गुजरात बोर्ड, ओके. अगर तुमको लगता है ना कि तुम्हारा स्कूल का पेपर अभी तक शायद सामने नहीं आया होगा, you can mail us by the way, youtube@BYJU'S.com. Send us your paper, we'll have a look. पक्का. B बहुत अच्छे. यार देखो, force is Newton, energy is joules, work is joules, energy is joules, force is Newton, kinetic energy is joules, power is, पावर का यूनिट क्या होता था यार, याद नहीं आ रहा मेरे को. पोटेंशियल एनर्जी इज जूल्स, बट सर व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? हेलो नितिन. अच्छा 324 से है. व्हाट सर व्हाट? अरे व्हाट है यूनिट? व्हाट इज जूल पर सेकेंड? वी कॉल इट वॉट, राइट? दिस इज द यूनिट ऑफ पावर. सो सेम इज वर्क एंड एनर्जी. वर्क एनर्जी दोनों क्या है? दे आर द two sides of the same coin. Saurabh, we have something called as rotational kinetic energy. In grade 11, there is a chapter called as rotation. When we teach that to you, we'll make you realize total combination of energy में ना rotational kinetic energy भी होता है. Yes, Ashutosh, you can.
Don't worry. What? Yes, science facts. That's true. Question 4. Next question. What would have a greater effect on the kinetic energy of an object? Doubling the mass or doubling the velocity? Which would have a greater effect on the kinetic energy of an object? Doubling the mass or doubling the velocity? Okay. No, this is for that the poll was not required. It's a subjective question. Yes, आशुतोष कहाँ रहते हो आप? देखते हैं. अंशिका, हाँ, don't worry बच्चा. Class 9th is the foundation. Class 11th is the building over it. If 9th is clear, 11th will be easy to you. Velocity क्यों? Why? Doubling the velocity क्यों भाई? हाँ, very good. Manju, I'll tell that. Don't worry. Because sir, kinetic energy is equal to half mv square. Which has square over it? Velocity. Since kinetic energy is equal to half mv square, doubling velocity, kinetic energy becomes कितना? Half m2v का square means 4 times of half mv square. Doubling mass, kinetic energy becomes how much? Sir, half 2mv square means twice of half mv square. यानी कि if you double the velocity, kinetic energy becomes 4 times. If you double the mass, kinetic energy becomes twice. कौन बड़ा? किसका इफेक्ट ज्यादा? Velocity का, because it has a square term. Very quickly just calculate and show it. इतना करने से ना सब समझ में आ जाएगा. Very good. Yes, है ना? बहुत easy question. चलो. A body of mass 10 kg initially at rest acquires a velocity of 10 meter per second. The work done is, this I'll give you a poll because it's a numerical. Jaldi, jaldi, come on. Solve karo. I'm giving you poll. In work energy, one most important topic from where numericals come. Yes, electron flow has kinetic energy. That's true. Come on. A body of mass 10 kg initially at rest acquires a velocity of 10 meter per second. What is the work done? That is the question, है ना? Question ये है. Yes, work energy theorem. You're right. Think. If a numerical comes from work energy, it will be from here. इसी से numerical आते हैं. B. Pole is active by the way, huh? Correct, Saurabh. Yes. भाई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. देखो, वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. मतलब इससे टफ क्वेश्चन तो मैंने तुमको क्लास में करवा रखे हैं ऑलरेडी पहले भी. बट आई एम प्रूविंग इट टू यू कि केस बेस्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आर एक्चुअली इजियर देन प्रॉपर एमसीक्यूज. तो केस बेस्ड क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ना. जितने लोग छोड़ते थे ना केस बेस्ड क्वेश्चन, इफ यू हैड अ हैबिट ऑफ choosing to do case based questions in the end, sir, I don't know, please, case based questions are the easiest questions possible in your exams. Please. Late हो गया अर्नब, थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा late. Okay, I'm ending the poll. 3, 2, 1. Let's end the poll. देखिए जरा, एंथे वाला क्लास मस्त था. ऑप्शन बी 73%. 73% पीपल से ऑप्शन बी. भाई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? सर, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस ऑफ हाफ एम यू स्क्वेयर. तो हाफ एम वी कैन टेक आउटसाइड, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर. करेक्ट है ना? अब व्हाट इज वी? इनिशियली एट रेस्ट, सो यू इज इक्वल टू 0. acquires a velocity of 10 meter per second. So v is equal to 10 meter per second. So half into mass कितना है सर? 10 into v square. v is 10 square minus of u square is 0 square. कितना आया? half into 10 into 10 into 10. कितना आ रहा जी? 5 into 100.
500 joules. Positive? Yes. Work done will be positive because finally the velocity is increasing. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव वर्क डन हुआ होगा ना, सिंपल सी बात है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यस. Why does sound becomes faint with distance? Shreya, because sound is traveling in a medium और medium के अंदर क्या है ना, damping हो जाता है. So in further classes when we teach sound, no, we teach you how sound dampens, intensity decreases. Correct? Easy. Shashi, you can. Anuradha, you can. Yes. MGH मत करो. See, MGH happens when work done is there but change in velocity is not there. So MGH वहां जरूरत नहीं है, वो अपने आप बोलेगा कि आपने बॉडी को यहां से ले गए, कितना हो गया तो वो MGH वहां पे. हाँ. Doppler effect. Doppler effect is the frequency changes when the sound source is approaching towards you and going away from you. Doppler effect थोड़ा सा अलग है. I'm talking about decrease in intensity. Very good. चलो. Eat lunch. Very good. बिल्कुल. Adu, 4 p.m. today. I hope you are coming. Right. Today 4 p.m. we are doing the case-based questions. The case-based questions which come in boards depending on आपका जो syllabus है, आपके जो competency question है, उसके हिसाब से case-based question हो रहे हैं. 4 बजे आज. Focus करना है. ठीक है. हाँ चलो. Sound. देखो भाई, sound is a very theoretical chapter. Content बहुत सारा है, but sound से ना questions उतने नहीं आते जितना बड़ा chapter है. The chapter is very big, but questions are slightly less. So if you ask me, it's not a very high weightage chapter, but sometimes questions come. छोड़ तो सकते ही नहीं हो. You cannot leave. So but easy questions come, है ना? Look at this. This question is all about till what time? Another 10-15 minutes. हाँ, very good. 10th की क्लास, बच्चा आज 4 बजे हो रहा है 10th की क्लास. ए, तुम लोग चैनल देखते नहीं हो क्या? Come on, watch यार, वहीं पड़ा हुआ है सामने. Today 4 p.m. 10th class is happening. Short भी डाला है मैंने. Come on. A violin and a flute may both be played the same time in an orchestra. That's true. भाई कोई violin बजा रहा है, कोई flute बजा रहा है, same time पे बजा सकते हैं. That is for sure. Both sound travel through the same medium, that is air, and arrive at our ear at the same time. Both sound travel at the same speed irrespective of the source. Whatever the source, speed of sound is same, na? Yes, sir. But the sounds we receive are different. I mean, you can distinct here. One is flute, one is violin. You know, your ears know, correct? This is due to different characteristics associated with the sound. Pitch. Sir, pitch की बात हो गई. Pitch is one of the characteristics. How the brain interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch. Definition दे दिया. ठीक है जी. The magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of mean value is called the amplitude. ठीक है भाई, amplitude दे दिया. Okay sir. A sound of single frequency is called a tone. Okay sir. Sound which is produced due to a mixture of several frequencies is called a note and is pleasant to listen to. Noise is unpleasant to the ear. Music is pleasant to hear and is of rich quality. What is the feeling you are getting? I'm going to ask you again. The moment you read this full passage, what is the feeling you get? Sir, sound से है. हाँ, वो तो पता है. What in sound? Yes. How a hearing aid works. Now, hearing aid works on amplification of sound. Electronic amplifiers, small ones. Music. Lucy, you're right. But that is not something that just because that's not in your syllabus. Music. Feeling कैसे आता है? देखो, हाँ, this question will be on characteristics of sound, है ना? सर, इसमें पता क्या बात हो रही है? Pitch, amplitude है तो शायद loudness होगा. Pitch, I know, it is the shrillness, depends on frequency. Loudness, I know, it is the amplitude, depends on amplitude, and it is the volume, है ना? कितना loud है sound, that is the loudness, okay. Tone over tone is something called as quality, timbre, तो मतलब उसी के ऊपर होगा question ये, है ना? Characteristics of sound पे question है ये, right? So all of this, it might be there, अब question देखते हैं. Yes? हाँ, let's do it fast, बिल्कुल यार. Which of the following statements best describes frequency? Hey, this is an easy question. Which of these best describes frequency? Frequency को सबसे ढंग से कौन बोल रहा है? बिल्कुल यार, you can come in. Tell me, which of the following statement best
describes frequency? First option, maximum disturbance caused by a wave. Second one, number of complete vibrations per second. Third one, the distance between one crest of a wave and the next one. Fourth one, the distance traveled by wave per second. Come on. B. A. Anukriti says A. Hello. Yes. Shreya, mass is total quantity of matter. Weight is the force of gravity on it. So, weight is mass into acceleration to gravity, m into g. Simple. Second law of motion. I think everybody is saying B, huh? I'll give you 3 more seconds. 3, 2, 1. Let's end the poll. भाई देखो, majority says B, 92%. वाह, बस इतने ही मार्क्स ले आना, कम से कम मैं खुश हूं. ठीक, इतना जरूर आने चाहिए. Maximum disturbance caused by a wave. क्या होता है maximum disturbance caused by a wave? What is it? Maximum disturbance from a mean position. सर ये होता था amplitude. This is not frequency. Third one देखते हैं. Let's see the third one. The distance between one crest of a wave and the next one. What is this? ये third option किसकी बात कर रहा है? It is talking about which characteristic? अच्छा, mistake से click हो गया. How light is transverse wave? Ashutosh, because it's electromagnetic wave. Electric field is going like this, magnetic field is going like this, so it's an electromagnetic wave, right? And it's a transverse wave. Wavelength, good. It is talking about lambda, है ना? Last one, distance traveled by wave per second. What is this fourth one? क्या है ये? किसकी बात हो रही है? Sir, distance traveled by a wave per second. क्या ये? What is this? क्या है ये? What is sonar? Sound, navigation and ranging. Sound will go down and come back. It is, last wala is what? Think, time period. No. Velocity. Distance traveled by wave, that is meter per second. It is what? Speed, yaar. Unit hai ye to. It is the velocity of the wave, speed of the wave. Correct. Second wala, number of oscillations per second. Sir, this is frequency. ये है frequency. Frequency क्या होता है? 1 upon time period. Time period इसमें आया ही नहीं कहीं. Correct, है ना? Last वाला velocity है बच्चा. This one is not time period. It is saying distance covered by the wave in 1 second. Distance upon time. Speed. अरे ये speed है, not time period. ठीक है ना? Wave number क्यों नहीं दिया? अच्छा, wave number. It's okay. देखो, wave क्या है? Vibration है. So number of vibration 1 second, number of waves per second, all this is fine. It's how the question will play with you. ठीक है ना? चलो. Correct answer is option B. Next one. When the pitch of note produced by a harmonium is lowered, then wavelength of the note. Yes, Kaustubh, answer, बताओ यार. Give me the answer. When the pitch of a note, A, B, C, D. When the pitch of a note produced by a harmonium is lowered, then the wavelength of the note decreases. First decreases, then increases, remains the same. Come on. Amrita says D, Muskan C, Ulma C, Kaustubh, please take my name, Avneet C, Muskan. Come on. Lucy increases, Sneha C. Everybody is able to visualize the wave, ना? कैसी दिखेगी? है ना? Sunil, good point. Tell me in the comment section. It's a very good point. A. Nathan says A. Okay, come on. 3, 2, 1. Now see, huh? I'm ending the poll. Bhai, pitch is lowered. Means, if pitch is lowered, means frequency is lowered. है ना? If pitch is lowered, means frequency is lowered. How does a low frequency wave look? कैसी दिखती है? This is one wave, like this, है ना? If you lower its frequency, it will look something like this. Something like this.
Now you tell me about the wavelength. A wavelength बताओ जरा. Sir, wavelength is one crest to another crest. This is your lambda. Here your lambda is going somewhere over here. This is your lambda 2. When frequency increases, the waves come very close to each other. है ना? ऐसे 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 ऐसे. If frequency is lowered, the waves go far from each other like this. So means frequency will come, frequency will be less, wavelength will increase, right? So correct answer is option C, it increases. Clear hai? Practicals of physics, yes Amrita. Hey, we have done so many shorts on the channel, so many videos we have done activity based, na? Very good. Correct Muskan. हाँ बढ़िया चलो क्लियर हो गया आ जाओ गुड मॉर्निंग कम 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 क्वेश्चन नंबर 5th में अलग नेक्स्ट पार्ट हेलो खुशबू यस 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 कम ऑन लेट्स सी if the speed of a wave is 340 meter per second and its frequency is 700 hertz a very easy question come on everyone another this is a numerical and this is the only possibility of numerical साउंड चैप्टर से एक ही न्यूमेरिकल पॉसिबल है जो कि है ये बस एक टाइप हेलो जीवन आशा हेलो 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 कम ऑन एवरीबॉडी हु इज जॉइनिंग लेट कम ऑन today we have done 5 most important case based questions. Intent was to prove that case based questions are not tough, they are actually the easiest questions in your paper. If you have missed the session watch it later. आए हो तो लाइक करके जाओ. Yes, poll is active. Shreya, the inner ear, the cochlea. Yes, yes, yes. Come on. Answer. अरे बहुत easy question है यार. Simple सा formula एकदम. एक formula और आएगा echo का. I mean echo वाला is also one more thing which is possible in grade 9th. So एक तो ये है. Sorry, this is for grade 8th also. 8th वालों के भी आ जाता है. For 9th तो ये है question और उसके अलावा we have echo वाले questions. Echo में तो बहुत simple है. 2d by t equals v. What is calorie? Muskan, it is the unit of heat or energy I would say. इस क्वेश्चन को समझ नहीं आया Andrews, speed of wave is given to you है ना velocity is 340 meter per second frequency is given to you 1700 hertz लोग इसको nu भी बोलते हैं lambda you don't know lambda is asked that is the question yes correct Sisla annual incus stapes उसके नाम है shortest bones in the ear correct I'm ending the poll 3 2 1 let's see देखिए जरा क्या चल रहा है option B 72% oh means you solved भाई velocity दिया है simple formula says V equals F lambda है ना भाई what is asked wavelength is asked so lambda equals V upon F ठीक है सर velocity कितना है 340 meter per second upon 1700 hertz 1700 ना 17 2 is 34 is equal to 0.2 आ रहा है यार 0.2 meters आंसर इज ऑप्शन बी करेक्ट है ना ऑप्शन बड़ा इजी क्वेश्चन था वेरी गुड मैलियस स्टेपीज ट्राइपस नहीं स्टेपीज इनकस the maximum speed of vibration which produce audible sound will be in maximum speed of vibration I'm not giving poll for this question very simple question speed of sound will be maximum in what 4 options come on बहुत easy question है tips to solve numericals practice Nami you have to practice the numericals because if you don't practice numericals if you are solving them first time you'll feel underconfident so practice NCERT exemplar in text questions करना है अच्छा इन सेंटीमीटर पूछा था क्या Oh, good catch यार 340 meter per second upon 1700 so what are you getting 17 to 0.2 meters oh guys कौन बोला nice सौरभ good catch 0.2 meter आ रहा है बच्चों you want in centimeter wave in centimeters so 0.2 into 100 आंसर होना चाहिए 20
ऑप्शन सी राइट है भाई, ऑप्शन बी रॉन्ग है। ए थैंक्स, यही गलती कितने लोगों ने की है? ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी राइट है। 0.2 इज मीटर। 0.2 इंटू 20 करोगे, इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा? 20। यस, मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ 20 किया ना, आपका राइट था। गुड गुड गुड। मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, सी v इज वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी इज, अब वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज और 1/सेकंड, करेक्ट। एंड लैम्डा इज मीटर, सो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज मीटर पर सेकंड विच इज स्पीड, है ना। हाँ, एग्जाम्पलर कहां से लाएं? अरे मिल जाएगा, सीबीएसई एग्जाम्पलर डालना आपको मिल जाएगा, बायजूस वेबसाइट पे मिल जाएगा, फ्री है वो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले के लिए एवरीबॉडी सी, वेरी गुड। अगले वाला तो इजी था ना, इसका तो सी आंसर था। सॉलिड्स, स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड्स, व्हाई? बिकॉज सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, इट इज इजी टू propagate the wave, and it is quick to propagate the wave. SI unit of wavelength is meter. Atashi, you are right, but the question is saying fine in centimeters ना, question बोल रहा है, correct है ना। अरे अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है यार? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? आ जाओ, चलो चलो चलो, हाँ कम आगे आओ। मेंटी नहीं होगा बच्चा आज, ग्राउंड ग्लास, यस, हाँ क्लियर हो गया एवरीबॉडी। साउंड चैप्टर के अंदर एको और स्पीड, इनसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, दिस इज द वे फ्रॉम विच न्यूमेरिकल्स कैन कम। इसके अलावा लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, पिच डिपेंड्स ऑन व्हाट, वेवलेंथ, ultrasound uses, all of these is something which is there, fine, right? So today I hope I have proved कि case based questions are easy, yes or no. Case based questions कोई भी नहीं छोड़ेगा, and now you have to practice them, yes है ना, correct अमृता, correct, yes है ना। Please, case based questions, don't leave them, they are very scoring questions, attempt them, do them, and they are very easy, you will surely get the marks, but don't be scared, fine है ना, बिल्कुल। Now for you, in the description we have given you the playlist, जिन लोग को जिस चैप्टर में दिक्कत है वो प्लेलिस्ट दी हुई है, you can watch that video, है ना। पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, whatever concept you feel like सर मेरे को समझ नहीं आया, उसके अंदर वो देख लो बस, that is good enough, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, right है ना जनाब। no need to watch the complete one shot, whatever you have the problem, you look at this and scroll, take the video over there, all of this is for you, the playlist is in the description for you, fine है ना। sample paper, Amrita, sample paper as such there is nothing, but in the BYJU'S app for grade 9th you will see practice papers, right? All those are from your syllabus, grade 9th practice papers. If you go to BYJU'S app, it's free by the way, whatever I tell you, all of those things are free on the app, है ना, right? correct, हाँ yes, हाँ अरे नहीं आज अभी सॉन्ग नहीं, सॉन्ग करेंगे किसी लंबे मैराथन सेशन के बाद, है ना, ठीक है। सो एवरीबॉडी, केस बेस्ड क्वेश्चंस आर इजी एंड यू नो दैट नाउ, यू हैव नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ देम। केस बेस्ड करो, प्रैक्टिस करो, वी डोंट हैव मच टाइम नाउ, बट आई एम प्रीटी श्योर यू विल डू अमेजिंग रिजल्ट, यू विल गिव अमेजिंग रिजल्ट। पढ़ते रहना है, डरना नहीं है, अपना ध्यान रखना है, वेदर इज चेंजिंग, तबियत खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस, सो एवरीबॉडी, see you next time. Any doubt, anything, comment section is waiting for you because we'll read that, fine है ना। नहीं song अभी नहीं, और अभी नहीं है ना। चलो everyone, take care, bye bye.